Okay, student, today we will learn chapter number 5, Water, class 7. What is water? You know that our daily uses we need water, and water is our main mm, needs for our life and for this environment also, for this world also. Because water we cannot uh, avoid from our life. We need water for our daily uses. Okay, so water, today we'll learn that from where this water is coming from and how it work in our daily uses. So when you think of water, now whenever we are thinking about the water, so suddenly we our mind is going to the river or sea or raindrops, water falling, है ना, uh, floating the boats on water, puddles, like that way different images are coming in our mind. Okay, when you think of water, water images come to your mind. You think of river, the waterfalls, the pitter patter of raindrops, water in your taps. Children loves to float paper boats in the rain puddles. By noon the puddles vanish. Where does the water go? From the rainwater. When the rains, now we know that it is our rainy season, and this times we can see a lot of water was flowing on the roads near to our house, on our roof of the house, like that way. When we are going a cycle or a bicycle or a car, we can see the imagine see the drops of the water, you know, it was falling on the ground. And when the rain stopped, what happened there? Suddenly the all the water was evaporated. It was all gone under to the ground. Why? Because the sun heats causes evaporation of water into water vapor. When the water vapor cools down, it condenses and forms a cloud. From there, it may fall on the land or sea in the form of the rainwater, snow, or a sleet. Now, how this water is coming from the sky? That we will learn about this in first standard, fifth standard. Now you are in sixth and seventh standard also, right? How it was rotating, what is the water cycling is there. When the sun heats on the water, what happens? The water evaporates. It's come up to the sky and become a huge big of a cloud. And suddenly, and after so many times, after so many months, the water become cools. What happened there? It will be become weight. At that time, it comes down, like a clouds and fall on the earth in a raindrops or in a snow or a sleet, we can say. This process by which water continually changing its forms and circulates between ocean, atmosphere and land is known as the water cycle. And this falling water, some water is going to the river, some water is going to touch the oceans, and also the inside the land. This all waters is coming upstairs and downstairs. That is called a water cycle. You can see that the one image also is there, that figure number 5.1, water cycle. Our earth is like a terrarium. Our earth is like a terrarium means what? It is an artificial enclosure for keeping small house plants. एक छोटा सा घर है हमारा ये अर्थ जो है वो, और इसको पूरा का पूरा प्लांट से रखा गया, पूरा से पूरा एक प्लांट से ढका गया. दैट इज कॉल्ड वाटर टेरेडियम. The same water that existed centuries ago still exists today. The water used to irrigate a field in Haryana may have flowed down the Amazon River 100 years ago. हज़ारों साल पहले जब पानी, जब वाटर साइज के मैसे फ्लड इन द हरियाणा, फ्लड के तौर पे आया था, राइट, एंड इट ऑल गोस टू द एंड ऑल द ट्रीज एंड एवरीथिंग वर डिस्ट्रॉयड एट दैट टाइम, and all the waters went to the ocean. The major source of fresh water are the river. Fresh water, from where we get the fresh water? It is from the river, ponds, spring and a glacier. Glacier means that it was a hard of the upper surface of the water that is that is became in the like a ice.
The ocean bodies and seas contain salty water. Oceans and sea water. Oceans means deep ocean water full of water. Seas means near to the ocean, that is both are same, but it is full of water. Contain is salty. The water of ocean is salty or saline as it contains larger. It contains larger. Okay. Now you can see that one map is there, that you can see that our how the lands are there, right? Amount of dissolved salts. Most of the salt is sodium chloride or the common table salt that you eat, right? What how they are making this salt? They will take a big land and they participate that land in the 2 or 4 side, and all the sea water they brought it and they put it on that land. After the sun heated that water, what happened that all the waters evaporate and the remaining part of that waters it become as a salt. These are the processes to make the salt. Okay. Now destruction of water bodies. Destruction are water bodies. We all know that the 3/4 of the earth's surface is covered by water. वाटर यस वी नो दैट द 3/4 यानी कि 3/4 का यानी कि मतलब हमारा जो पानी जो है वो अर्थ जो है वो 1/4 भाग 3/4 भाग जो है पूरा का पूरा क्या है पानी है, खाली 1 पार्ट जो है वो है लैंड. इफ देयर इज मोर वाटर देन लैंड ऑन द अर्थ सरफेस व्हाई डू सो मेनी कंट्रीज फेस वाटर स्कैसिटी. अगर हम लोगों के पास इतना सारा पानी है तो फिर भी कुछ लैंड को क्यों पानी नहीं मिलता है. Why there are so many places are there that they are suffering from the waters. They are not getting, like South Africa, right? In our country also is that Registan is there, Rajasthan is there, Rand of Kutch is there. In this place there is not water. Where is scarcity water? Water scarcity is there. So because why is all the water on the earth available to us? The following table gives the distribution of the water in a percentage. We can see that how they are getting less water. 3/4 part is of water, but that is not full of water. Is that it's a good water, but everything was a salty water. Ocean is 97.3%. Ice cap 2%. आइस क्रैप मीन्स पूरा आइस से ढका हुआ लैंड जो है वो 2% में. फ्रेश वाटर कितना है 0.009 वाटर ओनली. इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक्स 0.009. एटमॉस्फेयर हवा में जो पानी उड़ता है वो 0.0019. एंड रिवर्स 0.009. नाउ सी यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ मच फ्रेश वाटर इज देयर. फ्रेश वाटर इज देयर. सॉल्टी वाटर इज 97. बाकी का रिमेनिंग जो पार्ट मीन्स नियर बाय 3 है ना. Not also 3 but 2.8% is only the fresh water. Other salt water, salty water, and salty water cannot be used for drinking. Right? Understood? So these are the destruction of water. Water is absolutely essential for survival. Water alone can quench out thirst when we are thirsty. वाटर इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, यानी पानी हमको ज़रूरत है, लेकिन वाटर अलर्ट कैन क्यून्स आउट थर्स्ट व्हेन वी आर थर्स्टी. पानी ही हमारा प्यास बुझा सकता है. नाउ डोंट यू थिंक वी आर वेस्टिंग ए प्रीशियस रिसोर्स व्हेन वी यूज वाटर केयरलेसली. तो आज हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग पानी बहुत वेस्ट कर रहा है, राइट. हम लोग जब पानी वेस्ट कर रहा है तो हमको इसको बचा के रखना चाहिए, राइट. देयर आर सो मेनी एडवर्टाइजमेंट इज देयर लाइक द वाटर यू ड्रिंक, मेनी मेजर रिवर्स इन द डेंजर ऑफ द ड्राइंग आउट, गंगा अमंग 10 डाइंग रिवर्स, है ना. तो लाइक दैट वे वी ऑल कैन रीड द न्यूज़पेपर दैट डोंट नीड टू वाटर वेस्ट. So this is the freshwater records are there. Now we will learn about the ocean circulation. Ocean circulation. How? There is something magical about walking barefoot on seashore. The wet sand on the beach, the cool breeze, the seabirds, the smell of the salt in the air, and the music of waves. Everything is so fascinating. Unlike the calm waters of ponds and lakes, ocean water keeps moving continuously. It is never still. The movement that occur in ocean can be broadly categorized as waves, tides, and current. See,
Ocean circulation means you know that in the sea coast, we sea coast, seashore, we can say that the seashore also is there. There is a wet sand also is there, है ना. The gila sand भी है और भीना हुआ sand भी on the beach. The cool breeze, there the waves of the wind, it is very cool breeze. The seabirds, we can see the birds are there. The smell of the salt in the air and music of the waves, we can smell the air also. Salty air बोलता है इसका, एक अलग सा एक सुगंध होता है इसका एक. द म्यूज़िक ऑफ वेव्स, जब पानी का लहरें एक के बाद गिरता है तो उसका म्यूज़िक की तरह हमको सुनाई देता है, राइट. एवरीथिंग इज़ सो फैसिनेटिंग अनलाइक द काम वाटर्स ऑफ पॉन्ड्स एंड लेक्स. ओशन वाटर कीप्स मूविंग कंटिन्यूसली. ये तब तक नहीं हो सकता है जब तक पॉन्ड्स का पानी या लेक का पानी ओशन तक पहुंच पाता नहीं है. ये उनको साथ पहुंचेगा तभी पानी का लेवल एक जैसा रहेगा. इट इज़ नेवर स्टिल, ये कभी रुक नहीं सकता है, राइट. ये हमेशा इसका वेव्स बार बार गिरते रहता है हमारे ऊपर, लाइक दैट वे लैंड के ऊपर. द मूवमेंट्स दैट एक्योर इन ओशन कैन बी ब्रॉडली कैटेगरीज एज वेव्स, टाइड्स एंड करंट. वेव्स जो पानी का लहरें बार बार आते रहता है. टाइड्स यानी कि जब सन, मून और अर्थ जो है सन और मून के बीच में आ जाता है तो टाइड्स का लेवल जो होता है, टाइड्स मतलब पानी का जो लेवल जो होता है बढ़ जाता है. जब मून और सन के बीच में से अर्थ निकल जाता है तब टाइड्स का लेवल कम हो जाता है, राइट. तो पानी का लेवल जो होता है वो कम हो जाता है. करंट्स मीन्स व्हेन द वेव्स फ्लो and it will be very big waves will come at that time, current will be also passes there. Okay, so we will learn this waves, tides and currents. Now what is waves? When you are playing throw ball on the beach and the balls falls into the water, what happen there? It is fun to watch how the balls get washed back to the shore by the waves. जब हम लोग पानी का लहरें जब आता है या जाता है तो उसके अंदर व्हेन वी विल थ्रो ए स्मॉल बॉल एट दैट टाइम, ये बिग बॉल यहाँ उस बीच के अंदर, उस वेव्स के अंदर, तो क्या होगा, विद इन ए सेकेंड और विद इन ए मिनट द बॉल्स कम बैक टू अस, back to the shore by the waves. When the water on the surface of the ocean rises and falls alternately, they are called waves. पानी जो है वो उछलते रहता है, यानी कि जो लास्ट जो पानी जो होता है वो बार बार वेव्स की तरह आते रहता है. दैट इज़ कॉल्ड वाटर वेव्स. ड्यूरिंग ए स्टॉर्म द विंड्स ब्लोइंग ए वेरी हाई स्पीड फ्रॉम ह्यूज. बारिश के टाइम पर या बड़े हवा के टाइम पर जब विंड ब्लोस वेरी हाई स्पीड में जब होता है तब उस टाइम पे क्या होता है, पानी का जो वेव्स जो होता है वो बड़े बड़े ऊपर तक उछलने लग जाता है. दिस में कॉज ट्रेमेडियस डिस्ट्रैक्शन. इसको क्या बोला जाता है, ट्रेमेडियस डिस्ट्रैक्शन. एंड अर्थक्वेक, वोल्केनिक एरप्शंस और अंडर वाटर लैंडस्लाइड कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट्स ऑफ ओशन वाटर. अभी समुद्र के अंदर अर्थक्वेक जो है वो सिर्फ अर्थ के ऊपर ही नहीं होता है, इट वाज हैपनिंग इनसाइड द सी ऑल्सो. At that time, what happened there? There are two plates like that inside the earth. When they move, right, a little bit, at that time water will enter that two plates. At that time, what happened there? When they close, when they reach together, at that time, water comes out, right? So at that time, this water flow at very high, and it will be back to the water also, sea water also, and the waves was coming. That is called a earthquake. That is called that tsunami, like that we can say. A volcanic eruptions or underwater landslides can shift large amount of ocean water. As a result, a huge tidal waves called a सुनामी. बड़ा बड़ा जो ये जो होता है रेस से जो आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सुनामी. दैट मे बी हाई एट 15 मीटर हाइट, उसका फॉर्म ऊपर जा सकता है. द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वाज 150 मीटर हाई. दिस वेव्स से ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ मोर देन 700 किलोमीटर पर आवर. एक घंटे के अंदर 700 किलोमीटर, 700 किलो, एक घंटे के अंदर 700 किलोमीटर तक वो स्पीड से वो भाग सकता है, राइट. The tsunami of the 2004 caused widespread damage in the coastal area of India. The Indira Point in the Andaman and Nicobar Island got submerged after tsunami. राइट, तो इस जगह पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो था वहाँ पे 2004 के टाइम पर सुनामी आ चुका था. यू कैन रीड दैट वन ऑफ द स्टोरी हियर दैट सुनामी, हाउ द सुनामी हैज इरप्टेड इन द आवर इंडिया एट
2004. ओके, तो ये था फर्स्ट पार्ट दैट यू विल लर्न. रीड पेज नंबर 31, पेज नंबर 30, 31, 32 and 33 and 34. Okay.